and aspirations. Career is not merely a job, it is a reflection of your identity, passion, purpose, and also in today's session, it will be your compass in this journey of self-discovery. We are really privileged to have the team with us who is going to navigate us through this path. Actually, we all belong to different streams. So we have so many different options in our mind. And when we have different options, we always get confused as well. So we want someone who can let our strength, our compassion, our interest, our aptitude that should align with the success, with whatever path we choose. So without wasting much time, I would like to request the resource person along with her team to come us and navigate us through this session. So please, we welcome you, ma'am, and we welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good morning to all of you. Good morning. Thank you. What's my name? What's my name? Just ma'am told. Yes? My name is Komal, but Mr., not Miss. And that is the challenge I am facing from very beginning. And one more addition to it, my wife name is Anurag. So she is Mr. Anurag, I am Miss Komal. So my name is Komal Pudraja. I have done my MBA and CFA. It's a finance course, CFA from US. Yes. And after that, I am into this career counseling from last 25 years. In 98, when I completed my MBA, I started my CFA, and at that time, I started counseling the students who are going to take admission in CFA course. So that is the journey, and till date, I interacted with more than 27,000 students for their different career paths. So I am working for some universities also. So this is all things. All students are from +1 and +2? +2. Yes. Okay. One question. I start with a question because it will be more interactive rather than I am speaking and you are listening. Something. Ask one extended question to this. Anyone who can create a controversy. Only a message to your teacher. Only a message. आप अपने टीचर को कोई अच्छा मैसेज भेजना चाहते हो, नाम नहीं चाहिए मेरे को टीचर का, जो बेस्ट टीचर है अपने मन में रखिए, पर कोई मैसेज, एनीथिंग. अरे बड़ा कर दूंगा. आपका बेस्ट टीचर कौन है? नाम नहीं चाहिए, बस उसके लिए मैसेज बोलो. 2 मिनट सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. Teacher doesn't mean academic teacher. It can be your mother, it can be your father, it can be your uncle. Because teacher doesn't mean academics. Sir, I would say that my best teacher is my mother because she always guides me and motivates me. Guidance and motivation. So first thing, what's your name? Vani. And you are in +2. What subjects? Commerce. Vani, commerce, +2. Very good. So mother, why? Because she guide and motivate. Anyone else? Any volunteer? Vani, I will remember your name. Because whosoever gives me an answer, he will get a gift. Not now, but definitely. So now let's see. Any more volunteer? Only 3 volunteers I take. One is one, 2 more. 2 more. Yes, please. Good morning, sir. My favorite teacher is also my mother. It's because no matter whether I'm in my ups or downs, she's always there, and I know she has a support for me. She has a corner for me. Whenever I'm down or up, she'll always be there for me. Good. A lot of claps. Guidance, motivation, support.
mentorship. I can say it is a mentorship. Last one. Yes, beta. My favorite teacher is my father, who has been there with me all the time when I needed him, whenever I cried, just because I thought I scored low or maybe I'm not good at sports. But he always with one statement that "ho jayega beta" has always motivated me. So yeah, he's my favorite and the best teacher. Excellent, excellent. The motivation when you are down is the best thing you can receive from your best ones. Because you must face the downwards, that is true. But anyone who is supporting at that time is the best thing you can get in life. Sir, I think that the best teacher is the pain that you get from learning. If you Very right, very right. It's the pain. Pain is the best teacher because father can be temporary, mother can be temporary, but you learn from pain. You cannot learn from anyone else if you cannot try yourself. And if you try yourself, you get pain, then you learn. Definitely. Pain is also a good teacher. Pain, motivation, excellent answer. Your name, beta? Arushar. Ma'am, anyone who can note down the name of these students? We will. I will definitely reward these students. Please, the class and name of the students. Right? So this is a very interesting class. I like you people because I do lot of events, lot of activities. But the response I am getting from here, it's marvelous. I think something from leadership comes on. One more thing I have seen in your school, on your website, which I like most. And even I will tell you, it is the first school that I have seen that thing in your website, not any other school. Anyone who can tell that? Anyone? That is also there. One more thing, very interesting thing. Go ahead. Who is Ashi Jain, your teacher? She has birthday and it was displayed on the website. And even the birthday of one student is also displayed on the website. And it is the thing, you can check out any school website, you won't find it anywhere. And I now remember the name of that teacher. That she has the birthday. Is she there? No. Okay. And even some students also have the birthday and it is displayed on the website. It's a very interesting thing. I like it very much. Even from morning I am learning lot of things. When I entered the principal's room, I found some good portraits. And the name of the student is also Sonia Sani. It is there. So try to do that activity so that you will be remembered even after going from the school. And one quotation which is written very strong quotation. I verbally recognize that. This is the season of failure is the time to sow the seed of success. So whenever you are going anywhere, just try to learn everything. Just try to see what they think, what they do, because you can find that the ma'am has risen so far. So she must be doing something which is very unique. So try to compare, try to learn from them. Even your auditorium is full of knowledge. Bhaskar Acharya ji. Who can tell about Bhaskar Acharya ji? Anyone? Lot of gifts will be there. I assure you. Now your names are noted down. Who is Bhaskar Acharya ji? He was a mathematician. What your answer he has given? Pardon? सर एक तो वो भास्कराचार्य जी के फॉर्म में पाइथागोरस का वो डेरिवेशन दिया था और सर एक उन्होंने वो Well tried. So lot of knowledge is around you. You just have to good eyes and good ears to know that thing. So you are the best people in the world if you know it very well. So try, look around you. Nature is providing you knowledge everywhere. So only you have to visualize what is there. So let's begin.
Right. So my only thing is the power of perseverance and consistency. Anyone who listened this quotation before? करत करत अभ्यास जड़वती हो सुजाग रस्सी आवत जावत सी पे पड़त निशान. किसी ने इससे पहले ये दोहा सुना? Yes. Who said this? I heard it in a poetry competition or something. In a poetry competition. Any story behind this? I think it was about the pillars of success, and one of the very important or very essential pillar of success is perseverance and consistency, which is also the flexibility power or the power to never give up. And you know, I remember this poem from very beginning. In 6th, I read this story in Hindi subject, and till time I have this in mind. So what I will do, just give me 5 minutes, I will show you why this quotation comes into existence. Are you ready? Please. Ma'am, may I? जैसे चल रहा है वैसे उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बात पसीना आता था। गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। बालक वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही वरदराज को भी पढ़ाना प्रारंभ किया। वरदराज आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ न आता था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वह याद ही नहीं रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए, पर वरदराज वहीं का वहीं, वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने वरदराज से कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूं कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है। जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, पर मुझे लगता है कि विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहां का काम काज देखो। वरदराज असमंजस में पड़ गया। गुरु जी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे मूर्ख महामूर्ख कहकर चुटकारेंगे। वरदराज करता भी तो क्या, उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहाँ जाए क्या, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और दोपहर हो आई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था। उसे भूख प्यास भी लगाई थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से कुएं की जगह पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से
जमीन पर कटी पड़ गए हैं। यह दृश्य वरदराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गया। उसने विचार किया कि जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता? बस फिर क्या था, वरदराज के मन में आशा की किरण जगी। वह बुदबुदाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा। फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वरदराज ने कोने पर हाथ मुड़ा और गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था। इतना कि उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही थी। वह तेज कदमों से चल रहा था। अब वह दूसरी ही तरह का वरदराज था। वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट चला था। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम की बाड़ में टहल रहे थे। तभी उन्होंने वरदराज को आते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो, जिसे लेने वह लौटा है। वरदराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यही छूट गई है, जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने वरदराज को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना भर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो, यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहां गुम हो गई थी। वह देर रात तक पढ़ता और कहता सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ न गवाता। उसने दिन रात एक कर दिए। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। गुरुजी और अन्य बालक वरदराज में आए। इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। अब वरदराज की जिंदगी प्रतिभावान बच्चों में होने लगी। लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। जानते हो, यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान पाणिनि के बाद वरदराज का नाम आता है। Because this is the spirit which you people are lacking. If this is spirit you will be getting, कोई कोचिंग ट्यूशन किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी. You will be performing in excellence. Only this spirit is needed. Thank you sir for sharing this such a wonderful video. So my message from this movie is never tell anyone or never tease anyone that he is not intelligent enough. He can transfer himself, he can transform herself anytime. And if you are persistent, you have the learning, you can do anything in coming times. So try to work. And this is Varadaraj. Anyone who know Varadaraj, I tell you this also because it will solve your interest in science also. Varadaraj is the person who converted the Sanskrit grammar of Panini from 4000 shloks to 753 sutras. If you know about something about computer engineering or coding is already based on the Sanskrit grammar.
And Sanskrit grammar is given by a very renowned saint, Panini. Panini is the saint who gives 4,000 sutras, shloks, or we can say formulas, on which all computer science is based. And these 4,000 sutras, this Varadaraj has converted it into 753 sutras only to summarize all these things. So if you have interest in computer science and all these things, just go Google the stories of this Varadaraj and Panini. You will get interested in this technical part. So this story only to make you understand that this is the time you can start any time. You can start any time. You can do wonders in the life if you have the persistence. हेल्प करना सके So next is why this story? That continuous efforts. Why? What this happened? I tell you practically. Now today I will do sessions. Lot of motivation will be there. Students will start learning. But in a day, 2, 3, 4, your learning curve will come down. So only thing is continuous efforts. Continuous efforts you have to do. And even sometimes, somewhere, you can have bad days also. That is for sure. That is for sure the bad days will be there. ऐसा नहीं हो सकता हर दिन आपका अच्छा हो. बहुत बुरे दिन भी होंगे. बट उस टाइम आपको एक मेंटर चाहिए होगा. अपने टीचर को मेंटर बनाओ, अपने मदर को मेंटर बनाओ, अपने फादर को मेंटर बनाओ. प्रॉब्लम आए प्रिंसिपल मैम तक जाओ. बट डोंट फील स्लो. Don't feel stressed. Don't feel depressed. Because in your age, I have seen students with lot of burdens. Lot of burdens because they are only thinking. They are not working on the path ahead. कि हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं. Every solution is there. Solution is first, problem is next. There are only 3 types of personalities: solution, problem और question. आप आइडेंटिफाई कर लेना अपने दोस्तों को. कुछ होंगे वो हमेशा आपसे प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे होंगे. मेरा आज सर दर्द है, मेरा आज हेड दर्द है, मेरे को आज ज्योमेट्री कर रहा है कि मेरी आज कॉपी भूल गई. कुछ होंगे जिनके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा. कॉपी है, पिन पेज कर ले, कुछ है ये कर ले. और कुछ होंगे जिनके पास क्वेश्चन ही होंगे, आंसर नहीं होंगे. क्वेश्चन जरूर पूछते रहेंगे. तो यू हैव टू बी अ सोल्यूशन रादर देन अ प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन. क्वेश्चंस आर गुड बट विद आंसर्स. Whenever you are with your any problem, just try to get some alternatives. No doubt solution may be difficult, but if you work with your teachers, you work with your parents, you work with your authorities, the solutions will be there. So all things are continuous efforts. और academics का स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको शायद प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. राइट. सॉरी, आई थिंक इसको लाइव कर दीजिए से पकड़ के. आप आगे बैठ जाओ. मेरे से हो नहीं रहा है थोड़ा टेक्निकल. अच्छा, बस ये करना है. ये पोर्शन ऐसे जहाँ ऊपर जाएंगे. नेक्स्ट. हिलाना नहीं. So, how many of you people play musical instruments? कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यस, योर नेम? दिशा. कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? गिटार. हाउ मच एफर्ट्स आर देयर फॉर टू प्ले गिटार? जब स्टार्ट किया था तब था, अब नहीं है. और कौन सी स्ट्रीम ली हुई है? कॉमर्स और गिटार कैसे मैच करोगे? कॉमर्स भी है, गिटार भी है, कैसे मैच करोगे? Sir, as a hobby, I do in Saturday. Start a music company. Start a DJ. You have the commerce knowledge, you have the finance knowledge, you have the marketing knowledge, you have the guitar with you. Do anything. Start an event company. So, only my thing is, only what I want to say,
whatever you do, you can achieve anything in the life. So guitar, first you started learning, it's difficult. But when you do that thing simultaneously, it will be a hobby. It will be a this culture. Nowadays, if you have seen in just back few days, back few months, there is a story going viral everywhere. That is the story of Vinod Kambli and Sachin Tendulkar. Both are cricketers. Both have a good future. Both have the same coach, Ramakant Achrekar. Even Praveen Amre has the same coach, Ramakant Achrekar. Still, one is Sachin Tendulkar, one is Vinod Kambli, and one is Praveen Amre. So teachers are same, students are different. Because sometimes you won't make your practice as a hobby. You are doing the practice, you are doing the activities only because teacher told you. You don't have the courage, you don't have the authority to do it regularly. Regularity is the best thing you can do anywhere. So be regular in your activities. Be regular. Don't think कि आज ये चैप्टर कर लिया तो अब मेरा काम पूरा हो गया, अब आगे नहीं करना. Try to do it regularly. जब तक रेगुलरिटी होगी तो उससे होगा. अब जैसे मैंने इसमें मैथमेटिक्स का किया, मैथमेटिक्स और पब्लिक स्पीकिंग. If these two activities, they demand you regular. Even science, anything, any subject, anything, you won't deal कि मैं कल कर लूंगा. और कितने 5 से 6 सब्जेक्ट ही आप लोग पढ़ते होंगे, 5 ही सब्जेक्ट होते होंगे. तो 5 सब्जेक्ट में अगर 8 घंटे यहाँ है, 3 घंटे भी कर पढ़ोगे तो आपका सारे सब्जेक्ट तैयार होते रहेंगे. कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पीसीएम तो अच्छा, बायोलॉजी नहीं अच्छी, बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री नहीं है. स्टार्ट ट्राइंग, बिकॉज वो कहीं से तो बने, कहीं तो इंटरेस्ट पैदा हो सकता है. और +2 तक तो मैं कहता हूँ हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में 80% मार्क्स लेने ही चाहिए. ठीक है ना. उसके बाद आपकी अपनी अपनी स्ट्रीम्स हैं, अभी भी अपनी अपनी स्ट्रीम्स है. जस्ट स्टार्ट. जैसे किसी का कॉमर्स है, किसी का. हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बायोलॉजी? पीसीबी? वेरी लेस स्टूडेंट्स. व्हाई? थोड़ा सा इसमें मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, पीसीबी कम क्यों है बच्चे? अपना इंडिपेंडेंट व्यू दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. Any student? Why not PCB and why PCM or why commerce? It's not wrong or right choice. It's only the thing that you have chosen commerce or you have chosen the PCM and not PCB. Because why I am saying this? Because it's very interesting subject. But the problem is when a student is taking PCB, they are given only careers up to medical, MBBS or BSc nursing, or that is not the way. You can check out on the Google or even in my coming slides, you can check out how many areas are there. Biotechnology, biochemical engineering, and even if you people do your psychometric test, maybe you are doing commerce, but your personality matches to the biology or chemistry or maths. The only thing is, we take up the sometimes these specializations on the some recommendations. कि चलो फादर कर रहे थे, या कोई चाचा जी अच्छे सेटल है, या कोई मामा जी अच्छे सेटल है, ताया जी ऐसे, वही चीज हमने आगे ले ली. But my only question is, whatever you have done, because now you can't change your streams, but you can guide your juniors that they can take a well thought process before going anything. और अभी भी जो आपने एक्टिविटीज ली हुई हैं, जो भी स्पेशलाइजेशन ली हुई हैं, यू कैन टॉक टू मी इन डिटेल अबाउट दीज एक्टिविटीज. कॉमर्स के बाद क्या क्या एरियाज हैं, साइंस के बाद क्या क्या है, ह्यूमैनिटीज के बाद क्या क्या एरियाज हैं, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. सो इन कमिंग स्लाइड्स आई विल टेक अप दैट ऑल्सो. So these are the some personalities which have done marvelous in their life after perseverance and consistency. Anyone know about this Demosthenes? This story I share very well. It's a Greek personality. Why I share this story? Because it is very interesting story. You know this Demosthenes, he is a stammering. He has the problem of stammering. वो जैसे तुतलाता था बोलते हुए. And in coming days, he is the major world-renowned orator, and even he mentored the major king of Greece.
हाउ ही डू दिस, उसने क्या किया, समुद्र किनारे जाके वहां जो मोती होते थे वो गले में डाल के बोलना शुरू किया. प्रैक्टिस, ओनली आफ्टर प्रैक्टिस ही बिकम्स द वर्ल्ड रिनाउंड दिस ग्रीक ऑथर. इवन एडिसन के बारे में सबको ही पता है कि उसको तो स्कूल से भी चिट्ठी आ गई थी, क्लास से निकाल दिया था. Still he has invented the electricity. So this is the activities, these are the activities. If you follow these activities, you can do wonders. First, weekly skill challenge. Practice daily, track progress. What happened? Sometimes we practice but we don't track progress. I will give you the practical example. I have my son who is only 8 years old. Age मेरी ज़्यादा है, उसकी कम है. 8 years old, and the problem is he is good in grasping, he is good in everything, but the only challenge is he don't have the capability of writing too much. Writing उसकी एक बहुत बड़ी weakness है. Then his English teacher Abhiruchi Kalra, she gave me an idea that do one thing, just make with him, ask him to write and track the progress. What we do then? We have the challenge of 5 minutes writing. In 5 minutes, how much line he will write? First day, only 3 lines. In 5 minutes, only 3 lines. But nowadays, it is increased to 12 lines. So if we track the progress and we make it a challenge, we make it a game, it will give you the better results. Role play and debate, that you can do. Practice makes a perfect project. Try some activity in your class, plus 2 में, कि practice वाला कोई project or case study reflections, you can check it. Please sir, next. So these are the questions. Just biology I have told कि जो subject आपको है, और ये daily practice कैसे हमें दूर करेगी? Any answer? Daily practice. How many of you have the hobby of waking up early in the morning? कितने बजे उठते हो बेटा सुबह? 5 बजे. Good. How many of you wake up early 5 in the morning? कोई एक बच्चा मेरे को अपना रूटीन बताएगा 5 बजे उठने के बाद? कोई भी? Uh, 4:30 waking up, then get freshen up and take a bath, then around 5:30 puja, and around 6:10 then having breakfast, then a short revision for the day, followed by 7 o'clock reaching the school. Yeah, and around 2 o'clock I get back home, then again freshening up and having lunch, and followed by doing the homework for the day, and then self-study. Yeah. 2 things which he told me, and I think they are the best things which a student must have in him. First is short revision before coming to school, and next is self-study after going back to the school. These are the best things you can do. Whenever you are coming to school, just try to have a revision of the upcoming chapter or upcoming syllabus. Because when you are doing a syllabus or doing a chapter or doing a subject with interaction, with question answers, it will make you much better than only teacher is speaking and you are listening. So just try, my advice for all of you students, just try to have the revision before coming to school. At 4:30, 5:30 is the best time to wake up, have freshen up, keep only half an hour or an hour for short revision before coming to school. And you will just check, you can have n number of activities. और जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, you can understand that you are developing. जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट हो रहे, it means you are not understanding anything. क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि हम इतना अच्छा आपको पढ़ा दें कि आपको क्वेश्चन ही ना आए. क्वेश्चन इज द नेसेसिटी ऑफ डेवलपिंग एनीथिंग. और आज हम किसी भी यूनिवर्सिटी, ये जो अभी रैंकिंग वगैरह चलती है, जो एक्रेडिशंस चल रही हैं, these all are based on the research work which a university or school has done in back years. So my only questioning, if you are not questioning anything,
Daniel, share a story. It is very interesting thing. डेली कोई अच्छी स्टोरी पढ़ के आओ, अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने को भी बताओ, और जैसे जैसे होगा आपको काफी स्टोरीज आ जाएंगी. टेम्परेरी डिफिकल्टी इज नेचुरल. डिफिकल्टी आएगी, इसको नहीं दूर कर सकते, बट उसका सोल्यूशन भी होगा. नो डाउट इट विल टेक सम टाइम. Sometimes the solution will be in a day, sometimes solutions will be in a second, sometimes solutions will be in a coming up. Within a week, within a month, within a year, that is not an issue, and difficulty will be there. Only thing which is stagnant, which is must, that is consistency. You must be consistent to grow up. You must be consistent to ask the question. You must be consistent to be polite. Right? Sometimes what happens, we are very aggressive. In your age, I have seen the aggression at the peak, and this thing we have to follow. This thing we have to overcome. Don't be aggressive. Don't be depressed. Don't be stressed. You are too small to think over it. Just have the consistency about yourself, and you will carry it. So now I will come to some courses. Because within 15 minutes I have to wrap up, and 10 minutes for your question answer. So first thing, in medical terms, what are the traditional courses we have? MBBS, everyone know. In MBBS, how many seats India have? After plus 2 you have to do NEET. After that you have to take the admission in medical. How many seats India have in MBBS? 82,000 only. And how many students compete for these 82,000 seats? Approximately 30 lakh. Although 21 lakh students appear in the exam of NEET, 21 to 23 lakh, but when this merit comes, it reduces to 13 to 12 lakh, and they compete for 82,000 seats. So a lot of competition is there, but still, if you have the consistency from the very beginning, you can get it. BDS is there, veterinary sciences. It is also coming up very fast. B Pharma, BSc Nursing, and BPT. This medical lab technology, although it is only 5 years back it come to existence, but it is taking up very much, taking up in a very strong way. Next. These are the new age courses. I think you people maybe know, may not know, but my here thing is that you must know these things also. Because if anyone who is into biology, don't restrict yourself to MBBS. These are also the things which are coming up very fast. This BSc genetics, I can tell you that BSc genetics in coming years, stem cells वगैरह के पे कुछ studies हो रही हैं, और BSc genetics will be call of the day. Whosoever is interested in biology and won't get, I wish you all get into MBBS, but still these areas are also making class. These areas are also there, so that you can make a good career in that. Genetics, nutrition and dietary. Nutrition तो आने वाले टाइम में सबको चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाएगा, इतना हमारा खाना पीना ऊपर नीचे हो जाएगा कि न्यूट्रिशन सबको चाहिए होगा. So medical in these new age courses, you can have the seats, you can have the time, you can have the universities also. In this thing, I have not mentioned any university, but in future I will ask ma'am if someone is interested in any of the course, we will have one-to-one sessions also. That will be there. Next, sir. So emerging areas. Anyone who know about medical robotics? Medical robotics. It is already started. Some operations are done through robots, because they are very much perfect. And one thing, stem cells research, which I told you. Stem cell research is going towards clones. How to clone ourselves. So these are the emerging areas which are coming into medical stream. So that's why I am asking why so less students are into biology. Because the areas are, n number of areas are there. N number of universities are there. But students are not there. Because students only know कि मेरे को MBBS में नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा. But they don't know clinical research, medical robotics, even this stem cell research, genetics, stem cell research, medical robotics. These are the things which can make your dream come true. And even these are the globally recognized.
अगर आप इंडिया में नहीं बाहर भी रहना चाहते हैं, पाउंड डॉलर में पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा. ठीक है. नेक्स्ट. सो नॉन मेडिकल हुआ हैव द PCM, BTech AI and ML, BE robotics, environmental sciences, and this BSc forensic sciences. This forensic science, this can be eligible for biology as well as PCM student, for both. In forensic sciences you have a lot of areas, because in the coming time these will be included into the policing and army, all these things, forensic science. Next. Drone tech area, nanotechnology. In nanotechnology is the thing which will give us the medicine for cancer. Anyone who is interested in nanotechnology, he can be help to our biology students, because cancer treatment is through nanotechnology only. So these are the areas which are coming up in a great way. Why I am showing you these areas? Anyone who is interested in any of these courses, just Google it, just take up all the things, and then we will have the specialized areas, specialized sessions on the same. Next. Business. I think how many of you students are from commerce? A lot of students are commerce. So how many of you are thinking of CA? After commerce, how many of? Only 1, 2, 3. And CS? Company secretary? No one. CMA? Company secretary 1. You are looking for company secretary, right? Why? Just 1 second, beta. Sir, because there are good chances of income, and there is a good experience also in the. I'm interested in the administration, and therefore I'm interested in CS. What is company secretary to do? What company secretary do? Sir, company secretary is a person who manages the whole company, and in the administration work, the person is the manager of the whole company. Right. I tell you more elaborately. Company secretary is the person who is responsible of everything in a company. If anything, any compliances are not done, company secretary will be held responsible. Even some amount is there, if the company revenue is more than that amount, he must have a company secretary, because secretarial audit is now a compulsion thing. It's a very good course. How many of you are interested in CFA, Chartered Financial Analyst? You? Okay. You also. From where this CFA course is done? From which university or which institute? It's a professional degree, very right. From where? Which institute gives this syllabus? I'm not sure about that. I believe CA is for ICAI, Okay. Institute of Chartered Accountant India, and I'm not sure about the CFA one. Right. CFA is a degree which is given by US Virginia. It's a CFA institute. It has only 2 sessions for exams. Okay, only Delhi and Mumbai, and it is a very beautiful program. And if you have done CFA, you can work as a financial analyst anywhere in the world. And even if you plan for Australia or Canada, you can have reciprocal credit backup. Credit backup is, if they have 16 subjects, they will waive off 9 or 10 subjects, and you have to do the rest. CMA is also there. A lot of solutions. But I will suggest few people from commerce, just check out CFA, CMA, CS, CA. These are the good degrees. And even integrated program of MBA from IIMs, that is also a major push to you people. And IIMs are now giving the 5-year integrated program, and you can work out for that also. That is also a beautiful program, and you can have an average salary of 20 to 30 lakhs after doing that integrated program. Next.
So in this fintech is coming up in a big way. Fintech is how finance and technology will be merged. Every Google Pay, Phone Pay, or this any it is a fintech program. Business intelligence is there, and this green business is coming up in a long way. So in commerce, whatever you have, you just put up the questions. In the last, I will share my email ID. You can get the answer. Next, sir. In humanities, I will discuss the modern courses. Anyone who can guide me about anthropology? What is anthropology? What is anthropology? Study of small society. Okay. So anthropology is made up of two words, anthro and pology. Anthro means culture and pology is study. So basically anthropology is the study of the culture. Good. Very right. And anthropology has a very good career in abroad. In cultural cross connections, this anthropology has a way. And a lot of universities which are coming on to this. One name I will mention, not the university, Pratham Sinha. He has a very good university in humanities around you, and you can watch out. They have these courses. Ashoka University is the founder of Ashoka University, Padma Shri, and a very intelligent person. You can check out over that. Next. These are the new courses. UX writing. Someone in this session has told that he is interested in content and something also. UX writing is also there, because if you are doing graphic or animation, anything, this user X means user experience. How user will experience your website or your digital content. So these are why I am only mentioning you the courses which are available for you people. Detailed discussion will be done with individual lines. Commerce के साथ अलग, arts के साथ अलग, science के साथ अलग, that will be done. But you must be know how many courses are there for you people. Next, sir. इससे पीछे. So, इसमें graphic designer is there, linguistic is there. Linguistic is how you know how many languages. I know a person who knew 32 languages. 32 languages. Something we call Schengen. Schengen, what is Schengen? It's a group of 26 countries. And if you have a Schengen visa, you can travel to any country. 26 countries group, उसको Schengen बोलते हैं. और उसमें एक वीजा आपको मिलता है, तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं. You don't have to apply for visa. This is called Schengen. This is in Europe. So 26 countries, and he is the person who knew 32 languages. And what he told me, कि कोमल, अगर आपको सिर्फ 4 लैंग्वेजेस पता है ना, बाकी आप 20-25 तक अपने आप पहुंचे. Because languages, all the languages are developed from Greek and Latin. Even English is developed from Greek and Latin. So you can watch out कि words कैसे बनते हैं, sentence कैसे बनते हैं, तो आपको languages आ जाती हैं. So linguistic is also a good. Then last, are you people agree with all things we have discussed? Please be loud. Yes, sir. Now questions. Either you tell questions or मैं खड़ा करूंगा फिर बच्चों को. सबसे लास्ट से शुरू हो जाऊंगा मैं फिर. सोलिए के जाग रहे थे. So sir, you talked about consistency and preservance. So I have a doubt that like our environment, the house, like our house environment, doesn't it affect our consistency and the preservance? No. Your house always will support you. When they have seen that you are studying, they have seen that you are growing, they will support you. But you are only opened your books, you are sitting there, but not imbibing anything, they will not support you. I'm talking about the kind of environment the house is having. That doesn't make you different. Sir, I would like to answer that. Please. क्या नाम है बेटा आपका? What is your name? मानवी. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। So what you are trying to say is that if at home I am not getting proper environment for studies, then what should I do? Is it your question? No. Then what is your question? कैसा है ना? घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको कैसे हम मैनेज करें? तो ये जो है आपको खुद ही अपने ग्रिट से मैनेज करना पड़ेगा। अगर जीतने की जिद है तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आप जीतेंगे। उम्र आपको थका नहीं सकती। और अगर आप में जिद है जीतने की तो आप जीतोगे ही जीतोगे। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये बात पक्की है। आपको मैं ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं अपने ऊपर का। जितनी भी चीजें मैं जनरली बताता हूं, मैं अपने ऊपर की बताता हूं। मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, बैठ जाओ, और जिस समय मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था उस समय मेरे चाचा और मेरे फादर के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। और डिस्प्यूट की वजह से जो हमारे घर में लाइट थी, वो लाइट हमारे घर में कटा दी गई थी, क्योंकि चाचा ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। और लाइट कट जाने से आप देखो कि हायर सेकेंडरी का एग्जाम था मेरा, और मैंने इन परिस्थितियों से डरा नहीं। हमें जूझना आना चाहिए। मैंने अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर, लैंप जलाकर पढ़ाई की। और आपको मजेदार बात बताऊं कि मैं हायर सेकेंडरी के एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आया और कॉमर्स के अंदर 137 मार्क मैंने लिए। अगर हम परिस्थितियों से हारना सीख जाएंगे, विपरीत चीजों से। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। विपदाएं तो आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। आपके अंदर पावर होनी चाहिए जीतने की, वो आग होनी चाहिए। आपके अंदर मशालें जलनी चाहिए, तभी आप जीतोगे। बाहर रोशनी मत ढूंढो। क्या ये अंधेरे, क्या ये उजाले, क्या रोशनी ढूंढते हो तुम बाहर? तुम्हारी मशालें हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मशालें हैं तुम्हारे अंदर। तो अगर आपके अंदर जीतने की जिद है, करने की जिद है, तो आप हमेशा जीतोगे और हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। परिस्थितियों से घबराओ मत। मैं तो गणेश चतुर्थी चल रही है। गणेश जी और जो ऋषि व्यास थे उनके बीच में ये बात हुई। व्यास जी ने कहा कि गणेश जी से महाभारत लिखवाई जानी चाहिए, क्योंकि ही इज द परफेक्ट पर्सन। तो गणेश जी से हम ज्यादातर यही कहते हैं, सूर्य कोटि संभ्रभा निर्विघ्नम कुरुदे सारे सर्व कार्येषु सर्वदा। हम कहते हैं, हे प्रभु मेरे काम में कोई बाधा ना आए। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था गणेश भगवान जी से। तो गणेश जी भगवान बोले कि बेटा तुम बेवकूफ हो कि कहते हो कि बाधाएं ना आए। जब मैं भगवान होके मेरे काम में बाधा आई तो तुम कौन हो? तुम तो इंसान हो। मालूम है जिस समय वो महाभारत लिख रहे थे तो उनकी अपनी कलम टूट गई थी। अपनी कलम टूट गई थी, वो निराश होके बैठ जाते, कहते मैं तो फेल हो गया भाई।
उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने को भी कष्ट देके अपने दांत को तोड़ा और उसी से लिखना शुरू कर दिया। तो ये दम होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर ये दम होगा तो जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। सर्कमस्टांसेस की परवाह मत करो। अगर घर में नहीं सर्कमस्टांसेस है, स्कूल में लाइब्रेरी खुली है, मैं कल को 10 बजे तक लाइब्रेरी खुलवा दूंगा आपके लिए, आप यहां आके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं कि जिसके अंदर लाइब्रेरी 24 घंटे चलनी चाहिए। बच्चे जब मर्जी आए पढ़ें और जब मर्जी जाएं अपना घर जाके रेस्ट करें। मैं ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूं और खोलूंगा भी, जो सोचता हूं, क्योंकि वंस जो आप विजन करते हो वो चीजें पूरी होती हैं। लाइफ के अंदर याद रखना, आप ये सोचने लग जाओ कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप सोचो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, ये तो बहुत छोटी हैं और मैं करके छोड़ूंगा और मैं जीतूंगा। और मैंने ये लाइफ में पढ़ा है कि ज्यादातर लोग जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं वो हमेशा अपने अंदर कहते हैं आई विल विन, आई विल विन, आई विल। And I also used to say in my childhood from the very beginning. आपको छोटी सी बताता हूं। आज आप लोगों को लगता होगा कि सर गाड़ी में आते हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं और भी कई स्कूल खोल रखे हैं, तो सर के तो बड़े मजे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो मैंने पहला स्कूल खोला था और वो किराए की बिल्डिंग थी, उसके अंदर केवल 2 रूम थे। और जब अपनी बिल्डिंग खरीदनी थी 100 गज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। खरीदी, जगह खरीदी, फिर पैसे नहीं थे। कमरे बनाने के बाद प्लस्तर करने के लिए, प्लस्तर मैंने अपने हाथों से खुद किया कमरों में। ये बता रहा हूं आपको मैं। एडवर्टाइजमेंट कर छोड़ दो। बेटा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। एक स्टेंसिल होता था, उससे हाथ काले जाते थे। एडमिशन ओपन, गेट योर चाइल्ड एडमिटेड, बेस्ट एजुकेशन यू विल गेट, ये लिख के वहां पर टंगवाया करते थे। एक एक घर में जाके बच्चे इकट्ठे करते थे। मैं बैंक में काम करता था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बैंक में रहता था। और हमारे यहाँ त्रिलोकपुरी कॉलोनी है, वहां एक एक घर में जाकर बच्चों की एडमिशन के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करके आते थे। और जिस दिन अगले दिन एडमिशन हो जाता था तो सोचते थे कि किला फतेह कर लिया, एक बच्चा और एडमिट कर लिया, ऐसी फीलिंग करा करते थे। इस बच्चे का जवाब यही मैं देना चाहता हूं कि लाइफ में अगर हम जूझना सीख लेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम ना कर सके। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं जब हमारे जो बुलंदियां हैं, सोचने की बुलंदियां, वो बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि हे बंदे, तू खुद को कर इतना बुलंद, तू खुद को कर इतना बुलंद कि तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो मैं तो उस विचार का आदमी हूं। गॉड कहता है तुम्हें क्या चाहिए, उसको देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा। भगवान को तो मानना ही पड़ता। जब थम ठोक के ठेलता है नर तो पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पर्वत भी पानी बन जाता है, पर्वत भी पानी बन जाता है। थैंक यू। जिद हमेशा याद कर लो, जिद। सर का सेशन मेरे से बेटर था। हाँ, वीकली रख ले। जिद एक बहुत बड़ी चीज है, जुनून, जिद, जो सर ने बताया।
I think I am zero in front of you.